Hello, my dear scholars. So I come to know about your test that is being scheduled on 4th of this month. I hope you all are getting means well prepared for this. So let's have the test number 1 on this particular day. Now coming to the today's lecture topic. Today we came to the unit number 3, the first topic, that is the sampling, and this is a very important topic. So let's start the class now. And one more thing I would like to say, that I can see some scholars who have not attempted the questions that I have asked during my class and who have not submitted the assignments. Submit it, okay? Because otherwise, I'm sorry, I will not be able to evaluate your marks, and that will put some negative impact on your mark sheet and your attendance. And I don't want to do that. But please maintain the rule. Do that assignment as the class is, in the class, whenever I am discussing some topic, I'm trying to find out that how you are actually getting into the topic through some questions and the submission of assignments. So that part is very important. I don't want to mention the name, so please submit it. Otherwise, I'm sorry, I might take some negative, what I can say, actions against you. Okay. So don't worry. Those who have submitted, I have found that they are really doing great, and I'm putting 100% attendance to them. Okay, let's start today's class. Let me share the screen. So today's topic is, as I have already told to you, that is sampling techniques, probability and non-probability sampling. If you recall that I already told you what does it mean by sampling, because sometimes it may happen that we'll not be able to focus on the whole data set, right? Then we just select a sample from that data set. Sample means few collection of elements from that data set, and we work on that particular sample. Like when you conduct a research about a group of people, it's rarely possible to collect data from every person in that group. Instead, you select a sample, and that sample is the group of individuals who will actually participate in the research. ये भी एक example है, you can consider this one. To draw valid conclusions from your results, you have to carefully decide how you will select a sample, and that sample will be the representative of the group as well. So it is very, very important that how you are selecting that sample. Now, there are two types of sampling methods: probability sampling and non-probability sampling. Probability sampling involves random selection, allowing you to make strong statistical inferences about the whole group. अब इसका मतलब क्या है? देखो, आपके सामने 20 स्टूडेंट्स है सपोज, ठीक है? आप उसके ऊपर ये रिसर्च कर रहे हो, यू आर डूइंग ट्राइंग टू नो दैट ये जो स्टूडेंट्स है whether their IQ level is good or average or very bad. देन आपको हर एक स्टूडेंट के पास जाके आप रिसर्च करना मुश्किल हो सकता है, राइट? मुश्किल मीन्स इट विल टेक टाइम, एंड यू डोंट हैव दैट अमाउंट ऑफ टाइम. तो आप क्या करोगे? रैंडमली मतलब क्या करोगे? मतलब अचानक से कोई भी एक और दो पर्सन को और दो स्टूडेंट को आप बुला लोगे अपने पास, उस क्वेश्चन आंसरिंग करोगे और उससे आप क्या करोगे? जज करोगे, राइट? तो रैंडम का मतलब ये है कि कोई ऐसा रूल नहीं है. आप क्या कर रहे हो? आप इंस्टेंटली कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को आप सिलेक्ट कर रहे हो, राइट? सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये है कि वहां पे रैंडम सिलेक्शन. अब जब भी रैंडम सिलेक्शन होता है, देन उससे आप एक स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस ले आ सकते हो उस ग्रुप के लिए. मीन is okay. I think it is working now.
सो मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस मीन्स आप तो कुछ ड्रॉ करना चाहते हो ना, और यहाँ पे क्या ड्रॉ करना चाहते हो कि ये स्टूडेंट्स का आईक्यू लेवल स्ट्रॉन्ग है, मीन्स वेरी गुड है, एवरेज है और पुअर है। तो आप ये इन्फरेंस तभी अच्छा हो पाएगा, या तो तभी आप उस इन्फरेंस को सही मान के चल सकते हो अगर ये रैंडम होगा। तो नहीं तो आपको पता है कि ये स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है और उसी को आप उठा के ले आए, और उठा के मतलब उसको ही आप ये क्वेश्चन आंसरिंग जो था आपने कर लिया, और आप ये नतीजे में आ गए कि ये सारे ग्रुप एक्चुअली क्या है, उन लोगों का आईक्यू लेवल वेरी गुड। बट ये आप नहीं कर सकते, और ये करने से आपका रिसर्च सही भी नहीं होगा। तो एक स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के लिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज वेरी गुड, बिकॉज वी believe on or we do random selection in this case of probability sampling. I hope this is clear to you now. And remember, sample is the representative of the whole group. So whenever you are trying to select some sample, be sure that you are means you are not biased and you are including some randomness selection. Then coming to the non-probability sampling, and this involves non-random selection based on convenience or other criteria, allowing you to easily collect the data. अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में नॉन रैंडम सिलेक्शन था, मतलब आपके पास ऑलरेडी यू ऑलरेडी हैव सेट अप योर माइंड दैट मुझे यहां से कुछ एलिमेंट चाहिए, यहां से कुछ एलिमेंट चाहिए, यू ऑलरेडी सेट अप योर माइंड, यू ऑलरेडी फिक्स सम क्राइटेरिया टू सिलेक्ट देम। तो आपके पास अगर कुछ कंडीशन है, आपके पास कुछ क्राइटेरिया है, तो उसके बेसिस पे जो सैंपलिंग करते हैं हम उसको बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। और वहां याद रखना देयर नॉन रैंडम सिलेक्शन होगा, रैंडम सिलेक्शन नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ दो टर्म है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दे आर पॉपुलेशन एंड सैंपल। So you should understand between these two terms, the difference between these two terms, population and sample. So population is the entire group that you want to draw conclusions about, and sample is a specific group of individuals that you will collect data from. तो पूरा अगर ग्रुप को मैं बताना चाह रहा हूं, पूरा इफ आई वांट टू पॉइंट आउट द होल ग्रुप, देन वो मेरे लिए होगा पॉपुलेशन। आप अगर उसी में से, उस एंटायर डेटा में से कुछ पार्टिकुलर इंडिविजुअल्स को मैं फोकस करूंगा और उस पार्टिकुलर इंडिविजुअल्स का अगर ग्रुप बनाऊंगा, मींस आई मीन टू से इफ आई वांट टू take only few elements from the whole data set and I'm forming a group out of those few elements only, then वो आपके लिए हो जाएगा sample. Got it ना? So population, difference between population and sample. This is today's first questions. You will write the answer properly. So population can be defined in terms of geographical location, age, income, and many other characters. ये diagram देखो, ये जो मुझे मिला है, this I have taken from Scriber, and I want to thank Scriber for providing us so beautiful means document on this topic. So यहाँ देखो आप population, और यहाँ में से हमने क्या किया, sample. So remember MCQ आ सकते हैं, कौन ज्यादा बड़ा है, means which one is a subset of which one. So population is the superset and sample is the subset. So sample is a subset of population. Okay. Then sampling frame. Sampling frame means is the actual list of individuals that the sample will be drawn from. Ideally, it should include the entire target population and nobody who is not a part of the population. So sampling frame का मतलब है वो सारे इंडिविजुअल्स का एक्चुअल लिस्ट जिससे हम सैंपल को ड्रॉ कर रहे हैं, और जिनको हम इंक्लूड नहीं करना चाहते उसको हटा दीजिए। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, sampling frame is the actual list of individuals that the sample will be drawn from. Example, sampling from frame का example आप देखते हैं, you are doing research on working condition at company X
your population is all 1000 elements, employees of the company. Your sampling frame is the company's HR database, which lists the names and contact details of every those employees of that company. Okay. Then sample size, the number of individuals you should include in your sample depends on the various factors, including the size and variability of the population and your research design. So there are different sample size calculators and formulas depending what you can frame that samples. Okay. And that will be used for statistical analysis. So sample size का मतलब कितना elements उसमें आपने रखा है और कितना variability है, और आप ये नंबर बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं. आप मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं या तो कुछ कैलकुलेटर से प्रीडिफाइंड उसको भी यूज कर सकते हैं. Now probability sampling methods means what? That every member of the population has a chance of being selected. क्योंकि आपको पता नहीं, मैंने क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रैंडम सिलेक्शन होता है, तो हर एक एलिमेंट का सिलेक्शन होने का एक ही चांस है, राइट? तो इसमें क्या होगा, every member has the same chance of getting selected. So it is mainly used in quantitative research. I have already told you that there are different types of research, qualitative research and quantitative research. So questions बन सकता है कि probability sampling is for qualitative research or quantitative research. So probability sampling is for quantitative research. If you want to produce the results that are representatives of the whole population, probability sampling are the most valid source. Again, under probability sample, we have four main types. अब ये है simple random sample, systematic sample, stratified sample, and cluster sample. So simple random sampling, where every member of the population has an equal chance of being selected, and your sampling frame should include the whole population. ठीक है, हर एक का same chance है. Then systematic sampling, तो ये इसका अगर मैं example देखूं, simple random sampling, you want to select a simple random sample of 100 employees of a company X. You assign a number to every employee in the database from 1 to 1000 and use a random number generator to select the 100 numbers. ठीक है, ये हो गया simple, मतलब हर एक का same chance है. Then systematic sampling is similar to simple random sampling, but it is usually slightly easier to conduct. Every member of the population is listed with a number, but instead of randomly generating the number, individuals are chosen at regular intervals. Suppose all the employees of the company are listed in alphabetic order. From the list of 10 numbers, you randomly select a starting point. That is, suppose number 6. From number 6 onwards, every 10 person on the list is selected. That is 6, 16, 26, 36, and so on. So, and you end up with a sample of 100 people. So, if you use this technique, it is important to make sure that there is no hidden pattern in the list that might skew the sample. Okay, like suppose your HR database groups employees by team, and team members are listed in order of seniority. And there is a risk that your interval might skip over people in junior roles, resulting in a sample that is skewed towards the senior employees. ये भी हो सकता है, मतलब hidden pattern नहीं होना चाहिए, तब ये systematic वाला सही है. Then stratified sampling means in dividing the population into subpopulation that may differ in important ways, and it allows you to draw more precise conclusions by ensuring that every subgroup is properly represented in the sample. And to use this method, you divide the population into subgroup. मतलब अगर population को फिर से subgroup में divide कर रहे हो तो उसको बोलते हैं stratified sampling, क्योंकि ये subgroup को हम बोलते हैं strata. So ये भी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि what is called the what is the name of the subgroup that we divide or we do in the case of stratified sampling. वो subgroup का नाम क्या होता है जिसको हम सर्टिफाइड सैम्पलिंग में यूज करते हैं या तो सर्टिफाइड सैम्पलिंग में डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो ये भी आप कमेंट करके बताओगे. एंड ये जो डिवीजन होता है, जो स्ट्रेटा फॉर्म होता है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर होता है, लाइक जेंडर, एज, रेंज, इनकम ब्रैकेट, जॉब रोल. ओके, लाइक 100 एम्प्लॉइज फीमेल एम्प्लॉइज है तो 100 मेल एम्प्लॉइज है. यू वांट टू एंश्योर दैट द सैंपल रिफ्लेक्ट्स द जेंडर बैलेंस ऑफ द कंपनी. So you sort the population into two strata based on the gender. Then you use random sampling on each group.
selecting 80 women and 20 men, which gives you a representative sample of 100 people. तो दो हैं, दो मतलब 108 1000 में से 800 फीमेल है, 200 मेल है. आपको सर्टिफाइड सैंपलिंग करना है तो दो ग्रुप में डिवाइड कर लिया, और दो ग्रुप में डिवाइड करने के बाद मतलब जेंडर बेसिस डिवाइड किया, और वो दो ग्रुप के अंदर मतलब फीमेल के अंदर रैंडम सैंपलिंग किया और मेल के अंदर रैंडम सैंपलिंग किया, और अल्टीमेटली फीमेल में से 80 वुमेन और मेल में से 20 वुमेन लेके कंबाइन करके आपको 100 पीपल मिल गया. देन हमारे पास है आपका क्लस्टर सैंपलिंग. ओके, वी हैव क्लस्टर सैंपलिंग that involves dividing the population into subgroup, but each subgroup have similar characteristics to the whole sample. Instead of sampling individuals from each subgroup, you are randomly selecting entire subgroup. So if it is practically possible, you might include every individual from each sample cluster, and if the cluster themselves are large, you can also sample individuals from within the cluster using one of the techniques that I have already discussed. This method is good in dealing with large and dispersed population, but there is more risk of error in the sample. There could be substantial difference between the cluster. Okay, it is difficult to guarantee that the sample cluster are really representative of the whole population. तो क्लस्टरिंग सैंपलिंग में क्या किया हमने, डिवीजन कर दिया, और डिवीजन जो किया है पूरा पॉपुलेशन का जो डिवीजन किया है कुछ होमोजेनिटी क्राइटेरिया बेसिस पे किया है. एग्जांपल देखते हैं. द कंपनी हैज ऑफिसेस इन 10 cities across the country, all with roughly the same number of employees in the similar room. You don't have the capacity to travel to every office to collect your data, so you use random sampling to select 3 offices, and these are your clusters. ठीक है, 10 different cities में ऑफिस, आप हर जगह जाके आप कलेक्ट कर नहीं सकते, तो आपने क्या किया, 3 को रैंडमली सिलेक्ट करके उसी में से आपने क्लस्टर बनाया. ठीक है, वो 3 हो गया आपका क्लस्टर. Then non-probability sampling method में क्या होता है, individuals are selected on the basis of non-random. অজিতা মই ক্লাছত আছো, আপোনালোকে স্টার্ট কৰক, মই অলপ পাছতহে আহি আছো. মই 5 মিনিটত এডাই কৰি আছো. Okay, sorry for the disturbance. तो कहाँ पे था? हाँ, तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग में कोई आपका ऐसा मतलब रैंडमली, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या था, रैंडम बेस हम सिलेक्शन नहीं कर रहे थे. वहाँ कुछ एक क्राइटेरिया बेसिस पे आप सिलेक्शन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका क्या है, हायर रिस्क ऑफ सैम्पलिंग बियास है, क्योंकि आप जहाँ पे आपका वो टेंडेंसी है और जहाँ पे आपका फेवर है वो उस टाइप ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी सैंपल्स लाने का कोशिश करेगा, मतलब ज्यादा सैम्पलिंग होने का चांसेस रहेगा. आई मीन टू से, सपोज आप जानते हो कि ये स्टूडेंट्स आपका फेवर में है, मतलब आप चाहते हो कि ये स्टूडेंट्स में से कोई एक को आप सिलेक्ट करोगे, because you already know about the characteristics of those students and you are in favor of them. ठीक है, तो क्या होगा, अगर आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड यूज करोगे तो उसमें से सिलेक्ट करने का ज्यादा चांसेस रहेगा, रेदर देन आप कोई और ग्रुप में सिलेक्ट करोगे रैंडमली पिकअप करके, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, तो इसलिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज नॉट गुड, ऑल्दो इट इज वेरी इजी, because you already have information, you can select easily, but there is a high chance of sampling bias. And non-probability sampling techniques are often used in exploratory or qualitative research, because in this type of research the aim is to not test a hypothesis about a broad population, but to develop an initial understanding of small or under-researched population. So non-probability sampling जहाँ randomly select नहीं करते, वो क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसमें आपका सैंपल ये होता है डिफरेंट टाइप, लाइक कन्वेनियंस सैंपल एंड पर्पोसिव सैंपल. कन्वेनियंस एंड पर्पोसिव, देन आपके पास है कोटा सैंपल एंड स्नोबॉल सैंपल. ये डिफरेंट टाइप्स को याद रखिएगा. Convenience sample simply includes the individual who happen to be the most accessible to the research. Voluntary response sample means what happens, a voluntary response sample is based on easy of access, जहां मुझे ज्यादा सही लगेगा वो मैं सिलेक्ट करूंगा. Then purposive sampling means
Judgment sampling involves the researcher using their expertise to select a sample that is most useful to the purpose of the research. मतलब ज्यादा purposive है. Then आपके पास है snowball sampling. ये important है. If the population is hard to access, snowball sampling can be used to recruit participants via other participants. Number of people you have access to the snowball as you get in contact with more people. ठीक है. So this is all about sampling techniques where we have discussed each and every subtypes under probability and non-probability sampling. So आज का main question है, today's main questions is define probability sampling and non-probability sampling, state the differences between them, and state the subtypes of each such type of sampling techniques, explaining them with some proper examples. ये आप लोग करके मुझे दिखाओगे, सबमिट करोगे, ठीक है. एंड याद रखना जो भी मैं यहाँ डिस्कस whatever I am discussing here is not just important for your semester examination, it is also important for various competitive exams that you are going to sit for. This is of that standard, and also it will help you to understand your PhD research topic more better way. So I know you are already sincere. I hope you will do it within the timeline. So that's all for today. Thank you. Thank you very much.